I mean, I know you meet a lot of people around the year. You you must be meeting a lot of students around the year. So what is the most common wrong reason student choose a design college today? I'm saying they've chosen design as a career, Okay. but now there must be you must be observing. No, I mean, कुछ बच्चे ने एक गलत कॉलेज चुन लिया. So I think the essence of any institution, education institution, it is standing on three pillars. Number one, student, Correct. faculties, and curriculum. कई बार हम लोग एजुकेशन की जगह स्कॉलरशिप परचेस करने निकलते हैं. एज पेरेंट्स बता रहा हूँ, यू शुड एज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन, नॉट इन्वेस्ट ऑन योर डिस्काउंटिंग स्किल्स. सर, एक स्टूडेंट्स जो एक यूनिवर्सिटी आया, so there are few qualities that a student possess which makes him employable. Somebody who can take his services or employ him as an employee. So आपके हिसाब से वो क्या है? Is it talent? Is it discipline, mentorship or the complete ecosystem? ये चारों. लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना है, पैशन. क्या बात? डिजाइन जो है वो विदाउट पैशन नहीं हो सकता. आई वॉज रीडिंग ए बुक लॉन्ग बैक. जी. तो वो पूछ रहे थे, एक मैकेनिक था, तो वो क्या करते थे कि कोई भी चीज खराब होती थी तो वो अपना खुद का टूल डिजाइन कर लेते. करेक्ट. तो इन सज्जन ने, जो ऑथर थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, तो बड़ा अच्छा डिजाइन किया आपने, कैसे कर. तो उन्होंने कहा, देखा, लोचा, सोचा, किया. डिजाइन का मतलब सिर्फ व्हीकल डिजाइन नहीं होता. हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं गांव वालों के लिए कि पानी को कैसे ठीक किया जाए. हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि हाउ देयर वाइफ्स गेट द एम्प्लॉयमेंट. हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि उनका जो वो लोग धान या जो खेती के उत्पाद होते हैं, वेदर देयर सप्लाई चेन इज right or wrong. So we get enough opportunities, and in a way we are doing a service also, a social service also, which is one of the most integral aspect of any university. Correct. Hello everyone, welcome to the another episode of No Brochure Talk, Design Colleges Unfiltered, जहां हम डिजाइन एजुकेशन को मार्केटिंग के लेंस से नहीं, स्टूडेंट के लेंस से देखते हैं. आज का एपिसोड फोकस करता है अवंतिका यूनिवर्सिटी, विच इज नाउ ऑल्सो नोन एज MIT इंदौर. एक एजुकेशन जो डिजाइन लेड एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करता है और मेट्रो सिटीज के बाहर ऑपरेट कर रहा है. मेरे साथ हैं मिस्टर अमित शर्मा, who is the Chief Growth Officer and Director at MIT इंदौर, जो इस जर्नी, फिलॉसफी और ग्राउंड रियलिटी पर क्लैरिटी देंगे. स्टूडेंट्स आज NID, UC, NIFT के बाद प्राइवेट ऑप्शन इवैल्यूएट करते हैं और साथ ही सिटी, ब्रांड नेम, एक्सपोजर जैसे फैक्टर्स को वे करते हैं. आज हम इसी डिसीजन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर मूव करेंगे हमारे वही 5 टफ क्वेश्चंस पर जिससे हम हर यूनिवर्सिटी को अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं. सो लेट्स बिगिन. वेलकम अमित सर. थैंक यू. सो अमित सर, मेरा पहला सेक्शन जो है, इट इज मोर अबाउट स्टूडेंट डिलेमा. जो आई थिंक जब वो अवंतिका यूनिवर्सिटी का नाम सुन रहा है, MIT इंदौर, थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा है. हमने ऑफ रिकॉर्ड्स ये बातें करी. सो for students, does this rebranding change substance or only a perception? What would they actually evaluate? I mean, here थोड़ा सा confusion है सर. तो I'm openly asking you this thing. Okay, भाटिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. And I am so happy that the first statement which you made is the philosophy which we also undertake. We also keep students at the center stage, at the center of the table. सिर्फ छात्र हैं और छात्र हैं. जहां तक बात MIT ID की है, इट इज एक्चुअली MIT ID इंदौर. अवंतिका यूनिवर्सिटी शुरू से ही थी. अवंतिका यूनिवर्सिटी एक UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और ये पहले ही वक्त था जब MIT ब्रांड, जो एजुकेशन में एक बहुत रोबस्टनेस रखता है, वो महाराष्ट्र के बाहर आए.
सो 2012 में हम लोग यहाँ आए और 2017 में हमने इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। MIT ID जो है ये एक इंस्टीट्यूट है और अवंतिका यूनिवर्सिटी है। Okay. सो वी से MIT ID इंदौर डैश अवंतिका यूनिवर्सिटी। Okay. और मैं इन दोनों के मायने आपको बताता हूँ। जी। MIT का रहना इसलिए जरूरी है जो ये शो करता है, डिपिक्ट्स द रोबस्टनेस ऑफ डिजाइन एजुकेशन विच वी आर फेमस फॉर। व्हाई? क्योंकि MIT ID पुणे जिन लोगों ने खोला है ये उन्हीं का ही है। वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ MIT फैमिली, राइट? और अवंतिका यूनिवर्सिटी एक ट्रिब्यूट है उस शहर को जो आज से 5000 साल पुराना है। और 5000 साल पुराने में केवल 4 डिजाइन एजुकेशन हब्स हुआ करते थे, जिसमें एक नालंदा था, एक तक्षशिला था, एक बनारस था और एक उज्जैन था। क्या बात? उज्जैन को उस टाइम पे अवंतिका कहा जाता था और वो उस जमाने के 18 गढ़ों में या राज्यों में एक हुआ करता था जो स्टडीज के लिए, विचार विमर्श के लिए, साइंटिफिक डेलिब्रेशंस के लिए एक बहुत ही उत्तम स्थान था। क्या बात? So I think, sir, what you're referring to is also the Sandipani Ashram, where Of course. Sandipani Ashram, we have. It's a scientifically proven fact that the temple at Sandipani Ashram is close to 5,000 years yes, absolutely. old. When this was exactly the time when we have taken the cognizance of documenting the things. Wow. 5-6 हजार साल पहले, जहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं या इतिहास भी कहता है, हम लिख नहीं पाते थे जी। तो ये उस जमाने का केंद्र रहा है। और अवंतिका एक हमारी तरफ से इस नगरी को नमन है, जिस नगरी के अंदर वाइब्स ही उसी की है, जहाँ पे एजुकेशन को पराकाष्ठा पे रखा जाता है। So I think you are, as Avantika University, you are using that energy of course, learning. मतलब जो शायद कृष्ण भगवान को जिसने पढ़ा दिया। ऑफ कोर्स 64 कलाएं हैं वहां पे। और वो जो 64 कलाएं हैं उस आश्रम के अंदर, वो कहीं ना कहीं कला और अभिकल्प का ही रूप है। अभिकल्प से मेरा तात्पर्य डिजाइन से है। डिजाइन को हिंदी में अभिकल्प कहा जाता है। Oh my God, sir, मतलब आप तो, मुझे लगता था मेरी हिंदी अच्छी है, आप तो मतलब मेरी हिंदी को चैलेंज कर रहे हैं। So, पर सर मैं थोड़ा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, मेरे सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से हैं मेजरली। आजकल स्टूडेंट्स सोच रहे हैं यार, design education is majorly in metros, and then we are comparing places like Indore. Now we are talking about Ujjain. To the viewers who don't know, Ujjain is very near to Indore. So now with the new metro project, it is said that this metropolitan structure will have Ujjain integrated into Indore. So that's why we are calling MIT Indore. So ये डिसीजन स्टूडेंट्स कैसे ड्राइव करें? Is it because of that city exposure they should consider, or they should look at academic structure? देखिए, डिजाइन जो है वो इंस्पिरेशन किससे लेता है? वो इंस्पिरेशन लेता है नेचर से। बिल्कुल सही है। वो किसी भी ऐसी भीड़ भाड़ का मोहताज नहीं है जी। लेकिन देयर आर 3 क्रिटिकल पिलर्स फॉर एनी डिजाइनर्स, upcoming designers or budding designers to have. Number 1 is critical thinking. Correct. Right? Creative thinking and liberal thoughts. उसी environment में designers जो है उनको वो environment मिलता है. They get used to that kind of surrounding wherein these 3 things inculcates in them, and they have ample time to interact with the nature. I think you have seen the university. That's the best place for the designers. As far as Industry Connect is concerned, Indore is very nearby. We don't only have Industry Connect session, physical Industry Connect session in Indore or Pune or Industrial House, but also abroad. So our students have gone to Japan in January, then they are going to Poland, and that too free of cost because Poland government has given the grant of 64 lakhs to us. Oh my God. But over and above all these things, you are right. I understand that whatever we are doing or whatever students will be learning, it is for the industry. Correct. So we have a iConnect session. It is Industry Connect session wherein every week industry experts come to us, interact with the students,
they have those kind of jugalbandi on what is being they are learning and what is actually there in the industry. So that kind of manthan which the industry expert and students along with the mentors. When I say mentors, I'm referring to the teachers over there, the faculties over there, right? And then if there is a huge gap between what is being taught and what is there in the industry or in the corporates, we take the cognizance. Absolutely. And which means that in a year, there are 48 people who interact with them. And this is not only from a specified or unified industry. It is from Google, it is from Coca-Cola, it is from LinkedIn, it is from Bajaj Auto, it is from maybe Boston Consultancy Group, anybody, right? So there's different perspective which comes to us, and there are different activities wherein our student goes outside and learn the industry. That's great. That's so good to know. But sir, I mean, I know you meet a lot of people around the year. You must be meeting a lot of students around the year. So, sir, what is the most common wrong reason students choose a design college today? Wrong reason to Choose a college. choose a college or choose design? No. Choose a design college. I'm saying they've chosen design as a career. Okay. But now you must be observing. No, I mean, कुछ बच्चे ने एक गलत कॉलेज चुन लिया. Let's be very frank on this. Yes, sir. You have asked a beautiful question, and sometimes I face this agony around. Right. क्या होता है कि we have this tendency to get scholarship everywhere. Correct. Right. Yeah. Design education, believe me, if somebody is offering at a less price, it is difficult to say. it how is an the- expensive yeah, education. Yes, sir. it's a very expensive. So I think the wrong reason for choosing a college is asking for a scholarship. Uh-huh. So you know what? This is a very, very niche program. Design cannot be like engineering or management. Mhm. Fine. And I remember I was in one of the conversation with a very senior guy, and he mentioned way back in 16 and 17 there used to be only two institutes. One was NID and one was IDC Mumbai, right? Then by the time 2010 2012 there were around 100. Correct. Now it is 900. 900. So are we going on the route wherein when the computer education started, and then there are mushrooms of instituted cropped up, Correct. right? Who are giving the knowledge of computers or computer education or some kind of languages also, maybe for one month course or 3-month course or 5-month course, right? And what has happened then? 10,000 rupees per month, 20,000 rupees per month. Technically, no jobs. So design education, the student has to be very careful whether there is a legacy or not, number one, and what kind of faculties are there. So I think the essence of any institution, education institution, it is standing on 3 pillars. Number one, student. Correct. Faculties and curriculum. So I would even refine curriculum as pedagogy. Why? Because curriculum remains the same. 2 plus 2 is 4 here also. 2 plus 2, 4 is in USA also. Correct. So what makes the difference? It is the way of teaching, शिक्षा पद्धति, कि उसको पढ़ाया कैसे जा रहा है. और डिजाइन में ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को जानना, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी. Cool, सही सर. Sir, I mean, absolutely bang on point. I think जो आपने इंडिकेट किया वो मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में सबको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग एजुकेशन की जगह स्कॉलरशिप परचेस करने निकलते हैं. एज पेरेंट्स बता रहा हूँ. सो आई थिंक you should, as parents and students, you should invest on your education, not invest on your discounting skills. So it's a very hard word in education, I guess. Yes. But more than scholarships are for scholars. Yeah, and it is there. I mean, see, if you deserve it, it is there. Yes, as a university, it is our pride to invite and to give some kind of concession to students who have fallen in merit.
Correct, absolutely. Why not? Yeah, why not? But that should not become a constraint, or that should not become a only point of consideration while getting the While admission. dating. Yeah. So I'll come to the design reality check. Now I'm talking about the complete market as such. Okay. I'm not talking about Indore. I'm not talking about maybe Avantika, MIT, ID here. Mhm. I'm talking about a general psychology of a child. Mhm. सर आप और मैं दोनों जानते हैं कि इट्स अ वेरी ग्लैमरस फील्ड पीपल चूज डिजाइन फॉर वट एवर ग्लैमर आई मीन व्हिच इज देयर सो वो क्या मिथ है जो स्टूडेंट्स में आप ऑब्जर्व करते हैं व्हेन दे आर इन देयर फर्स्ट ईयर इन द कॉलेज व्हाट इज दैट बिगेस्ट मिथ दैट दे कैरी Okay. Very nice question. And I am talking in general. I'm not Yes, yes, specifically absolutely. talking Yes, to yes. Avantika, right? Every design college has a foundation year. Correct. First year is a foundation. First is a right? foundation. And in foundation course, so students from various streams, they get admission in the institute, design institute, it's college, university, whatever, right? Somebody is from commerce background, somebody is from arts background, somebody is from science background, background. somebody is preparing since class 8, somebody is preparing since class 10 to crack the entrances examinations, right? Somebody got infatuated, as you mentioned, right? Fashion design, right? Yeah. Fashion design. So first year is to bring people, all students at same platform, right? And give them the exposure of all design disciplines so that their swabhav comes out. Now, swa means self, bhav means expression. Right? So when they get the exposure and when they explore all the different disciplines of design, भाई ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, इंटरेक्शन डिजाइन क्या होता है, आजकल नया आया है यूआई यूएक्स क्या होता है, तो सबको पता है यूआई यूएक्स, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये डिजाइन क्या है। तो उनके कई मिथ टूटते हैं। मुझे लगता है कि वो उनके लिए और एक्साइटिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डिजाइन का जो पैशन होता है, जिस पैशन से वो लोग आते हैं, उनको एक रास्ता अलग से मिलता है, क्योंकि जब उनका स्वभाव सामने आता है, उनको उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एहसास होता है। और अमूमन ये हर डिजाइन कॉलेज के अंदर ये जो पहला कोर्स होता है, पहला साल होता है, ये इट इज डेडिकेटेड टू फाउंडेशन। करेक्ट। और उसके बाद वो स्ट्रीम करते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबली शायद बच्चा, आप जब उन्हें सेम प्लेटफॉर्म पे लाना, मैं एक ही चीज इमेजिन कर रहा था, सेम प्लेटफॉर्म पे आएगा कैसे? कुछ लोग अपलिफ्ट होंगे, कुछ लोग शायद लेकिन हाँ, एजुकेशनिस्ट को, लोगों की या इंस्टीट्यूट की ये जवाबदारी होनी चाहिए कि वो उनके सामने सारे डिसिप्लिन्स को इक्वल ट्रीट करके उनको बताए। ऑफ कोर्स उसमें इतिहास भी बताया जाता है डिजाइन का, डिजाइन के कंसेप्ट होता है, क्रिएटिविटी कहाँ काम करती है, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है, ये चीजें भी बताई जाती है। बट मोर और लेस क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो बचपन से या सोचता है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो मैं डिजाइनर बनूंगा, राइट? एक में तो सबसे बड़ा यही है कि भाई मैं ड्राइंग करूंगा, लेकिन उस ड्राइंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो भाटिया साहब जैसे आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप भी उनको एक दिशा देते हैं। उस दिशा को परिपक्व होने में यूनिवर्सिटीज का हाथ बहुत बड़ा होता है। व्हाई? बिकॉज देन दे एक्चुअली मीट व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन avenues or the ways they can explore, whether their strengths are actually, भले ही वो ड्राइंग स्किल्स हो, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हो, उस पर्टिकुलर डिजाइन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है, नहीं है, इंटरेस्ट कहाँ है, पैशन कहाँ है, और वो फिर चूज करते हैं। तो इन ए वे यू आर राइट, कुछ उनकी उम्मीदों पे धक्का भी लगता है, बट कुछ नए एवेन्यूज भी दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक स्टूडेंट्स जो एक यूनिवर्सिटी आया, इंस्टीट्यूट आया, नाउ अगेन आई एम टॉकिंग वेरी इन जनरल थिंग, so there are few qualities that a student possess which makes him employable, somebody who can take his services or employ him as an employee. So आपके हिसाब से वो क्या है? Is it talent, is it discipline, mentorship or the complete ecosystem? ये चारों, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना है, पैशन। क्या बात? डिजाइन जो है वो विदाउट पैशन नहीं हो सकती। वाह। और उसका कारण भी मैं बताता हूँ। देखिए, डिजाइन जो है उसका जो इंट्रिंसिक नेचर जो है वो सेल्फ सेंटर्डनेस है ही नहीं। करेक्ट।
So you design for somebody else. एब्सोल्युटली। तो आपको एक व्यक्ति बोलेगा नहीं लाल चाहिए, एक बोलेगा नीला चाहिए, एक बोलेगा पीला चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे मशीन ऐसी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, एंड देन यू हैव सो मच ऑफ थिंग्स, सो अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट पैशनेट टू डिलीवर व्हाट पीपल इन जनरल इज आस्किंग फॉर इट। बाकी टैलेंट तो चाहिए, भाई टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन यू सेड इट इज इंपॉर्टेंट, मेंटरशिप ऑफ कोर्स। देखिए ये तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे ही दी हुई है, और ये विश्वव्यापी फैक्ट है कि जो 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 टीचर होता है उसका सम्मान हम करते ही इसलिए हैं कि वो हमको वो रास्ता दिखाता है जहाँ पे वो चल चुका है। वो सक्सेस हुआ या नहीं सक्सेस हुआ, कम से कम वो आपको ये बता सकता है कि भाई ये रास्ते में गड्ढे ज्यादा है और ये रास्ते में गड्ढे कम। Absolutely. I mean, see, वो तो आई थिंक हर जगह के लिए वैलिड है, पर आपने बहुत अच्छा एक एंगल दिया कि पैशन, पागलपन, वो बहुत जरूरी है, डिजाइनर्स हैज टू बी पागल। पागल होना ही चाहिए। सही बात सर। सर अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 3 पे, जहां वील टॉक अबाउट MIT ID इंदौर बाय अवंतिका यूनिवर्सिटी। उसकी फिलॉसफी पर थोड़ा सा उस पे आई वुड लाइक यू टू पुट इन लिटिल लाइट ऑन दैट। Avantika often speaks about design thinking across disciplines. I mean, I've been there. I've seen, design thinking being implemented in management and even in engineering and obviously in design. How does that practically show up in classroom? Does it really show up in classroom? Of course, because see, I'll tell you, I was reading a book long back. Mm-hmm. मैं ऑथर का नाम भूल गया, आई एम सॉरी, बट बड़ा अच्छा लिखा था उन्होंने। जी। तो वो पूछ रहे थे, एक मैकेनिक था, तो वो क्या करते थे कि कोई भी चीज खराब होती थी तो वो अपना खुद का टूल डिजाइन कर लेते थे। करेक्ट। तो इन सज्जन ने, जो ऑथर थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये तो बड़ा अच्छा डिजाइन किया आपने, कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि देखा, सोचा, देखा, नहीं सॉरी, देखा, लोचा, सोचा, किया। अच्छा। हाँ, which means you identify a problem. So coming to your question, when the problem is there, what is the problem here? We give problem statement to the student. Why? Because design का एक, और खासकर अवंतिका में हम लोगों का एक बहुत बहुत conviction है इस चीज का कि we have to completely focus on the practical aspect of pedagogy. सो प्रैक्टिकल हर डिजाइन इंस्टीट्यूट में होता है, बट यहाँ पे फोकस इसलिए ज्यादा होता है कि जब तक आप खुद कोई असाइनमेंट को पूरा नहीं करेंगे, कोई पोर्टफोलियो को पूरा नहीं करेंगे, मे बी ए टीचर विल आस्क कि ये पंखा खोलो और बताओ कि इसको पंखे को ऐसा टिल्ट क्यों किया गया, कलर वाइट क्यों है, राइट? सो सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और वो उसकी लिमिटेशंस के बाहर के होते हैं। So somebody has to get in touch with the students of engineering. Somebody has to get in touch with the student of management कि इसको market कैसे करेंगे, because वो मेरे assignment में है. That is there in assignment. They have to give it, or they get in touch with the mentor to get the solution out of it, or to brainstorm. See, as I have already mentioned, design is never self-centered. It has to go out. Correct. It has to go out. If I am a designer, it doesn't mean that I am a very good marketer also. But मैंने डिजाइन करके रखा और उसका कोई लेने वाला नहीं है, what is the use? हाँ sir, you have to design. I mean, ultimately एक aim तो होना ही चाहिए कि it has to be a commercially viable design. Correct. दूसरा coming to core of your question. हमारे यहाँ पे जूरी सिस्टम है, तो ये नहीं कि मैंने अगर किसी को पढ़ाया है डिजाइन तो मैं ही उसका एग्जाम लूंगा। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी हर प्रकार की अप्रोचेस है, जो आपका क्वेश्चन है जी। तो ये मैं नहीं देखूंगा, वो जूरी देखेगी। There are more than 100 people which we invite for the jury. Achha. Yes, they are budding designers. They have established designers. Somebody who is from a marketing side, somebody who is head of the organization, right? And he or she takes the jury. Okay. तो जब तक कि वो बच्चे का ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट नहीं होगा, जिसके लिए उसको लोगों से मिलना ही पड़ेगा, इंजीनियर लोगों का इनपुट लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट की किताबें पढ़नी पड़ेगी उसको, तो तब तक वो कैसे प्रेजेंट करेगा? और यही डिफरेंस है अवंतिका के अंदर कि वी आर कंप्लीटली अनबायस्ड व्हेन इट कम्स टू इवैल्यूएशन. इट इज कंप्लीटली इन द हैंड ऑफ जूरी.
जूरी सेशंस होते हैं, उनका आता है, वो अपने प्रोजेक्ट लाते हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के जा रहे हैं, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना के जा रहा है, जी। पर जब जूरी पूछेगी तो वो किसी बाउंड्री में नहीं पूछेगी। जूरी के ना से पूछ सकते हो, ठीक है आप बताओ बेचोगे कैसे, व्हाट विल ही आंसर। करेक्ट, 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 करेक्ट। सो जूरी को हमने लिमिट करके नहीं दिया है कि आप यही पूछोगे, ये उसका नजरिया है कि हाँ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन जूरी Correct. विल आस्क, राइट? So it's a 360-degree kind of a question It's that can come up. absolutely. So you don't have to give your resume, you don't have to present you have to present your portfolio. Hmm. कि this is what I have done. Whether it is relevant or not, you decide. पर सर आज का जो बच्चा है, जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो उनको लगता है कि यार डिजाइन इंडस्ट्री इज इन मेट्रो सिटीज। आप इंदौर में ऑपरेट कर रहे हैं, सो हाउ डू यू compensate this perception? I mean, is there something which the university does to compensate this perception? No, I already mentioned about iConnect. Correct. You Right. mentioned that, yes. I mentioned about iConnect. I also mentioned about the industrial visit we do. Mhm. I also mentioned about the foreign visits we do in various universities. We learn from them also. So I think apart from this, this is a myth, actually a myth, that design should always be in metro. In fact, if I say most of the design institute which are very successful, including Avantika, you call it other institute, our parent organization MIT IIT, when it was started, there was nothing. It is not in Pune. It is far way way distant from the main city. the main Now it has been in city after 20 city. years. Does that harm? The city has grown. The city has grown. So I think education, if अगर आप देखेंगे, not specific to design, पुराने जमाने में भी जो गुरुकुल होते थे वो राजधानी से बहुत दूर जंगलों में हुआ करते थे। करेक्ट, राइट। सो एजुकेशन, अगर आप ऑक्सफोर्ड को देखेंगे, आप स्टैनफोर्ड को देखेंगे, ये यूनिवर्सिटीज हजारों एकड़ों में फैली थी और शहर से बहुत दूर हुआ करती थी। आज वो शहर में आ गई है बिकॉज वो शहर उनके पास आया है। नंबर 1। नंबर 2, एक यूनिवर्सिटीज का हमेशा से एक दायित्व होता है जी, और वो दायित्व होता है कि उसके आसपास के इकोसिस्टम को डेवलप करना। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक वरदान है कि हम ऐसी जगह पे है कि हमको डिजाइन प्रोजेक्ट अपने आप मिलते हैं। डिजाइन का मतलब सिर्फ व्हीकल डिजाइन नहीं होता। करेक्ट। हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं गांव वालों के लिए कि पानी को कैसे ठीक किया जाए। हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि हाउ देयर वाइफ्स गेट द एम्प्लॉयमेंट। हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि उनका जो वो लोग धान या जो खेती के उत्पाद होते हैं, वेदर देयर सप्लाई चेन इज right or wrong. So we get enough opportunities, and in a way we are doing a service also, a social service also, which is one of the most integral aspect of any university. Correct. Sir, again from a student's perspective, the students compare a lot of colleges. Now, when I say they are comparing in MIT Indore with other private design universities, schools, what should they objectively compare? And now here I'm talking beyond infrastructure and placements. Yes. So I will talk only beyond infrastructure and placement. There are two things which they need to check. Number one is what is the pedagogy, how the teaching is imparted. Number one. Number two, faculties. I think these two combined with the infrastructure and the placement and the exposure and complete package that they have to see. So I think if a student or a parent is looking at an institute, especially when I say MIT Indore versus anybody, you are saying your pedagogy of overall education, the course curriculum, the faculties. This is not at par. This is beyond the other colleges. That's what you wish to say? As a director for Avantiki, of course I will say, but I have reasons to say also. Okay. So I would request all your students, I have initially also confirmed with your statement that we keep students at the center of the table. Correct. So I think we are at the age of information, everything is available. Alright. Please do check, and with aapke madhyam se, I would also like to invite your students and parents. Give me a chance to host you. Seeing is believing, right? Absolutely. Seeing is believing. But I will reinforce one thing. Please check
everything. All information is there for everybody, not only for Avantika, for everybody. Please go through the profile of faculties, what they have done, what kind of institutions they are coming from, what kind of experience. Because design, again, I'm saying it is more of from a practical angle. So you need to have what kind of faculties have actual industry connect in their past assignments. So these are the things. Because see, again, I'm coming to the same thing. There are only three things: students, faculties, and pedagogy. So pedagogy and faculty will decide student future. Absolutely, absolutely. In fact, आपने जो बोला seeing is believing, मेरे को एक Japanese term याद आ गई. So in Japanese style of management, there is something known as doing Genba. Genba. So Genba. Achha. Genba is when you go, check, Hmm. observe, and then decide. Okay. Genba. The action. I mean, Genba is more towards problem solving technique. Okay. But they're saying don't solve the problem sitting at your office. Okay. Go to the location where the problem is, Okay. observe it, and do it. I Do mean, it's very similar to what you're saying. Sir, now I'm coming to those, 5 tough questions which I am doing as a series standard. Okay. All right. And this has been asked to all the top universities, which we, and please don't mind me saying that, which we qualify as our top universities, Okay. and being rated by our students, being rated by, the industry. Okay. All right. So these are 5 tough questions. And मैं आपको पहले ही बोल दूं, please don't mind me asking all these things. These are little. No. Please tough go ahead. one. Please go ahead. Sir, why should a student trust a private design college when outcomes vary so widely? I mean, you and me both know outcomes vary. Why they should trust a private college? Why not? Government education is very limited, number one. Yeah. Number two, the equipments, the faculties in all the government, with due respect to all NIDs and IDCs and all those stuff, of course, they have got tremendous grant from government, right? But the kind of flexibility which private institutions have in terms of changing the curriculum, adapting what is going in the market, right? Getting new equipments, right? Getting new technology immediately. I think private institutions are far, far ahead from government institutions. Secondly, government cannot, looking to the population, looking to the aspiration of the students, specifically in design. Government doesn't have that kind of infrastructure, right? I was telling you the example of Andhra Pradesh. How people are migrating from that place, Correct. right? It is the same situation. Secondly, when I say why not? I think when private education started, I am giving the example of engineering way back in 1983 in Maharashtra, when Dr. Shri Vishwanath Karatji got the permission to start an engineering college, right? You see the difference. So unless and until there will be availability, there will be a dearth, how will we become designer? And then there is again a myth. Private student educating from private institutions are doing much better. There is a designer from NID or MIT, whatever. They are doing very good in the market. Just to give my example, though I don't really believe in those placement in terms of ROI specifically, but students who have completed their masters in UI UX, they are immediately hired by companies like Mindtree or IBM or BCG, right? So these are from private colleges also making their career ahead. And this is a myth. Again, it is the same story like IITs and private colleges, right? Correct. So I think this is a very, very noble venture from private players, that they are inculcating or they have imbibed design as an education discipline, so that the aspiration of budding designers can be met. Perfect, sir. So I'll when you started talking about placements, my actually next question is around placements only.
So whenever we see a placement brochure, we see very good numbers being posted there. Uh, College would like to show how good is their placement. So what is the real placement truth that doesn't make it to those brochures, placement brochures? Yes. See, I agree. There are certain things which are market driven, right? So, in order to attract talent, good students, you have to give all the information, right? So, giving the information on placement is one of the aspect, while you give the information on the infrastructure, laboratories, faculties, right, and other attributes of a institute. Correct. So, in that way, placement data needs to be given. But I don't see placement as something which should be on the top thing to consider any institution. I'm not talking about Avantika. Our placements are very good, in fact. As one of the most important attribute to take the admissions. Now you are talking about the camouflage which happens. Right? I'll tell you. Design, Bachelor of Design is a 4-year course. Correct. Right? A student comes with aspiration in heart and mind, right? And he or she spends 4 years there. Correct. Okay. How can a placement decide? How can a placement decide what he has learned in 4 years? It's just like, how can you judge somebody in 10 minutes interview? I'll tell you why. You make friends of lifetime there. Correct. You design your own ventures. You design your own way of thinking. Fine. You spend, some students, they enjoy the facility of a campus and then they learn new skills. Fine. Somebody I've seen the number of students who are now into meditation because our campus gives a wonderful view of sunrise and sunset. Right. There are some students who are learning cricket because they have never seen such a big ground coming from the metro. Right. So placement should not be the 1-point criteria for anything, for any decision, or to calculate even the ROI. Because these 4 years, a student spends there, fine, he or she has lived that 4 years. Okay. Fine. And the institute like Avantika, which offers students from 24 states, there's a lot of learning which has not been recorded or which has not been into parameter of placements, right? Okay. Of course. Now, on the other side, I am not denying that placement is not important. Of course, we as a Indian mentality, we still have to be switched to entrepreneur mindset rather than the नौकरी वाला concept, right? Correct. मैं खुद अपने बेटे को कहता हूँ, इज इन SRFTI, भाई तू नौकरी करेगा क्या करेगा? बोला पापा नौकरी की बात मत करो. So there's a huge shift of thinking between parents and students also. Correct. और ये 4 साल में it is not only the subject he is learning, he is also learning कि what are the advantage of being entrepreneur, applying the skills which he or she has learned in the new business avenues. Correct. Right. So my views on the placement, of course, everybody will put highest package, lowest package, as you are asking, mean package, meridian package, right? This is the information, and mostly I'm sure nobody would fudge those figures. I'm Fine, sure. because some of the things are published also, some of the things are in social media also. So as a very conscious employee or somebody who is in education, I feel there are some sectors like education, publications, right, or aviation rather, where the hygiene has to be very, very upright. So you cannot play with the future of students. Correct. You cannot, in aviation also, you have to be perfect that all C checks has been done. Yes, absolutely. Right? The only industry where 5 Sigma is being followed to the core. Yes. Sir, I'll come to the next question, which is about you admit students, or any private college would admit students with very diverse capability levels. So, how do you maintain academic quality without lowering the bar of education?
No, I told you about the foundation course, right? Correct. So foundation course is not only for the students, it is for the mentors also to evaluate which students need more focus on which area. So once we have selected, it is our responsibility to ensure that the students come out with the flying colors. Okay. Of course, there are few percentage of students who thinks that they have chosen a wrong field. The choice is them. I mean, we have taken the responsibility to ensure that you get good placements, you get good assignments, you get good capstone project, right? The industry exposure is fine. So but the point here is there are in every institution, even in government institution, some section of students who think they have chosen a wrong field, possibly. So we don't. I mean, no institution will take responsibility of the students who will not follow the discipline, the core things, right? Out of not interest. So I initially mentioned you that if the passion is surviving, you will grow like anything. So you're saying There's just a there must be launch pad. some filtering that will always happen. That's always there also. It's always But there. once we have imbibed, if a Hmm. student is with us, it's our responsibility. So coming to my next question is more about the cost of education. Hmm. In design, we know it is significantly high. It's quite high. I mean, compared to other education, the traditional education that is there. And I understand. I mean, the education cost is high because design itself is a skilled program. You need a lot of machines, a lot of infrastructure that goes in. So it has to be a costly education. Hmm. But now my question is, from a student's perspective, in what scenario the return on investment, though individually I'm not a big fan of ROI as a concept, but I am still asking because my parents, I mean the students, the parents, they would ask us, in what scenarios is this ROI not worth it? No, see, I'll simply. There's a very simple statement I'll make. Even I am not a fan of ROI. I mentioned ROI should be calculated on the friends he will make, time he has spent, the skills he has learned. But coming to the ROI, design education, and I have the example of my own institution, Avantika, we are getting tremendous response. That response itself indicates that whatever they are spending, they have the opportunity to earn, if I may have to say so. Otherwise, I will not go myself into this ROI business. But sir, my question is something else. My question is, in what scenario this doesn't happen? I mean, it doesn't happen with a lot of students. No, I mentioned you, those who think that they have taken a wrong decision, those who are not disciplined, those who will not abide to the culture of practically doing or learning things, they will face problem, and this is true for everywhere. I mean, it is true in our family also. You see, there are two brothers, one is highly skilled, the same education has been given, same वही खाना दिया है वही उसको, environment सब मिला कुछ है, सब दिया है, कुछ तो ये होता है. This is nature. This is nature, absolutely. This is how we are designed. Correct. So there will be, I mean, you're indicating Of that there will course be there will filtering be, happen because it is not suiting that person. And in that scenario, I guess Of course there will. the investment into this kind of education is not worth it. Then. Of course. So that's why my first thing was people who are passionate should only join this. So now, sir, my next question, which is the last question of this series, is coming from that only. सर, एक मैं आपको एक नोशन बताता हूँ. बताइए. जनरली लोग बोलते हैं यार प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया है हो ही जाएगा. So, do private college genuinely reject students who won't survive design, or is it a rejection rate very low, or is it rare? As MITID, what are your philosophies of filtering? Okay, I'll come to the first part. I mentioned you way back in 1960s, 70s, there were only 2 institutions. Correct. It has grown to 200. Now it is 900. Right. Right. Not everybody is surviving. There are institutions which have started design, they could not do it. They are closing. In fact, they've closed it. Yes. ये बाजार है, right? It's market. Market के अंदर कई आप
आप और हम देखते ही हैं, वी आर फ्रॉम इंदौर, हर साल 50 रेस्टोरेंट खुलते हैं बिकॉज दैट पैशन इज देयर, बट उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो जो टेस्ट देगा, जो इकोनॉमिक रहेगा, वैल्यू फॉर मनी देगा, वही सर्वाइव करेगा। ये तो मार्केट ड्रिवन चीजें हैं। तो जैसा इंदौर में बोलते हैं कि यहाँ 365 खुलते हैं साल में और 365 बंद होते हैं। हाँ, तो ये नहीं, बट मैं उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ जो मशरूम जैसे या बस आउट ऑफ ब्लू खुल जाते हैं, सोचते हैं थोड़े दिन चलता है और बंद करता है। क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दोज इंस्टीट्यूशंस। I'll talk about those institutions which are surviving, not only surviving, they are thriving. Thriving, yes. ठीक है, MIT is one such name, One session, absolutely. right? We have a fixed intake from government कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है. and I'm very happy to say that we complete our intake every year. I And do you think reject? that rejection is always there. Why? Because there are lots and lots of application. See, you have to understand from other perspective. आज भी जो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के प्रति लगाव है, राइट, वो सर्वोपरि है. जी. It is on the, it is a topmost agenda. Correct. So let's accept it. Correct. That doesn't mean that they are the best. But then you should also appreciate there are few private institutions which have started and they are thriving. They are opening branches. Correct. We are one of them. We have started from Pune. Now we have started Indore. We have started Shillong. Shillong, yes, yes. Getting my point. So why are we doing it? We are doing it because we are getting tremendous responses from the students. See, it is a dynamic. If somebody is spending 25 to 30 lakhs in the education, he or she will research 100 times to invest. Yes, absolutely. Why Fine. not? So when the seats are full, which itself means that the rejections are there. Correct, correct. So, sir, thank you so much. I mean, you actually gave very direct and straight answers to my, the tough question series. Now, coming to the end of this discussion, this podcast, one thing which I, as an educator, I, as an influencer, feel in the market is what you said. I mean, आपने जो बोला कि भाई गवर्नमेंट के प्रति सर्वोपरि है, प्यार जो है वो बहुत है हमारे, the culture, the complete mindset is towards that. So, what do you like to say to a parent who still thinks design is risky compared to engineering and management? So I want you to address that thing, and possibly this should be something that I would also wish to hear. Ki why not engineering and management still? Okay. In engineering, जी. when I used to be a student, तब वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलता था, सिविल इंजीनियरिंग चलता था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलता था, राइट? आज सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल रहा है. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मध्य प्रदेश में सारी सीट्स खाली जाएगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट आप छोड़ जाइए, राइट? नंबर 1, मैनेजमेंट के अंदर आपको 1760 ऐसी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट मिल जाएगी जो आपको डिग्री दे देंगे, राइट? क्या कारण है? कारण यह है कि जब इंजीनियरिंग का रिवॉल्यूशन आया था, तब जिसने भी कंप्यूटर का कोई कोर्स कर दिया उसकी नौकरी लग जाती थी. जिन्होंने उस टाइम पे NIIT चलता था, एपटेक चलता था, आज सब यूएस में बैठे हैं. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, बहुत आम आदमियों की उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जमाना चेंज हो रहा है जी, और मैं पेरेंट्स को यही करूंगा, लेट्स एक्सेप्ट द चेंज. अगर आप रिजिड हो जाएंगे, उसके लॉजिक बहुत है. 20 लाख लोग बैठते हैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंसेस में, 20 लाख. आप क्या क्वालिटी आप दोगे, क्या कहां पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, नोबडी नोज. मैनेजमेंट के अंदर 15 लाख का कॉर्पस है. 15 लाख लोग स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल मैनेजमेंट के अंदर, और नौकरियां कहाँ है? और मैं ये आपको CII की रिपोर्ट दे रहा हूँ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की. एज पर CII, देयर आर 80,000 जॉब्स अवेलेबल इन डिजाइन.
Oh my God. And what और is इतना the तो हम supply? प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे What सर. is the supply? Only 24,000. अब मैं वही बोल रहा हूँ, इतना तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे. तो क्या निश है? दैट इज द रीजन. दैट इज, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आप चेक कर सकते हैं CIA से. व्हाट आर द डिजाइन जॉब. मैं कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे उसका सोर्स नहीं पता, बट दैट हैज इंक्रीज टू 1 लाख नाउ. ओह हाँ, अच्छा. 1 लाख क्वालिफाइड डिजाइनर्स, राइट. सो ये तो पेरेंट्स और टीचर्स को और बच्चों को सबको समझना है कि हमको डिजाइन को किस आयाम तक ले जाना है. अगर बच्चा पैशनेट हो तो उसको अच्छा इंस्टीट्यूट मिले. दिस इज व्हाट आई विश, राइट. जॉब्स की और असाइनमेंट्स की कमी नहीं है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े बोलते हैं. क्या बात है. तो आई थिंक फॉर द पेरेंट्स इट इज वेरी स्ट्रेट. अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा एक ऐसी अच्छी एजुकेशन ले जिसको वो एंजॉय भी करे, जिसको पैशनेटली फॉलो भी कर पाए, और 100% से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, तो डिज़ाइन इज द फील्ड. Thank you so much, sir. That was very practical and grounded conversation. Thank you so much, Amit sir, for addressing these questions directly and with a lot of clarity. जो लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ MIT इंदौर का एपिसोड नहीं है. ये नो ब्रोशर टॉक सीरीज का पार्ट है, जहां हम हर प्राइवेट डिजाइन कॉलेज से कुछ स्पेसिफिक 5 क्वेश्चंस जो सेम होते हैं, टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, जाकि स्टूडेंट्स हाइप से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लें. अगर आप डिजाइन एस्पिरेंट हैं या कोई पेरेंट हैं और आप ऑप्शंस को समझना चाहते हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड. और पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए सिंपली मैसेज हाई ऑन 8896332222 एंड हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड वी विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस. See you in the next episode.